Hello and welcome again. So, in the last session, we have discussed the theoretical part of convolutional neural networks. Actually, we have started with the OpenCV concepts or the computer vision, basically, we are dealing with. And for that purpose, we are going to use the open source computer vision library of Python along with the some libraries called TensorFlow and Keras that will be used to implement the CNN algorithm in Python. So that libraries also we are going to talk about, and we are going to install all these libraries into the session. So in the last session we have discussed what is convolutional neural networks, what is image, how the image is represented in terms of computers, what is two-dimensional image, what is three-dimensional image, what is color image, what is black and white and grayscale image. Also, we have seen the architecture of convolutional neural networks. Inside that, we have seen there are two important stages. Number one stage is the feature extraction or the feature learning. And as far as the feature extraction stage is concerned, there is convolution, ReLU, and pooling kind of layers that we have to study. And we have seen the operation of convolution, operation of ReLU, and also the working of pooling. So there are three different types of pooling: max pooling, average pooling, and sum pooling. So in today's practical, we'll be talking about the max pooling, and that's what we're going to implement. And for the feature extraction, these three layers can be used together, and again, we can add the multiple stages of convolution plus ReLU plus pooling. And that's the same thing we are going to implement in today's session. Also, we have seen for the classification stage, there are three different layers, we can say. First of all, there is a flattening layer. Second one is fully connected neural network. That's again the number of layers we can use. And at the end, softmax activation function we can consider to classify a particular thing. So in today's session, we are going to build the neural network to classify brain tumor. So basically, we are going to do a small project that will be a brain tumor detection system using the convolutional neural network. And for that purpose, as usual, we'll be following the steps. First of all, we'll have a data set and we will train our data set. So maybe 30% data or 20% data we'll use for the testing purpose, and 70 to 80% data we'll use for the training purpose. At the end, we'll evaluate our performance of our network using some performance measures. We will plot the accuracy and the losses of our network. And we'll use the graphical form this time because as we are going to use number of epochs to train the model, so we will be using the graphs, and based on such graphs we'll be displaying how the network is performing uh, as per the number of epochs we train the particular neural network. So what is training and all that things we'll discuss, but let's quickly revise the things that we have seen in the last session. So number one thing that we have seen, that the image and how the image can be represented in terms of computer. And this is the summary of convolutional neural network. Here, once you apply image as an input, its features will be extracted by the convolution operation, and that will be a convolved features. And as per the convolution is concerned, the image matrix is convolved with the filter matrix, and at the end we will get some matrix, two-dimensional matrix, and that is nothing but the convolved features or the features of that image. Now, in order to add some non-linearity inside the features, we have used the ReLU operation. Now, the purpose of ReLU is to convert negative terms or the negative values in our feature matrix to zero. So that's the simple thing that ReLU was doing. After that, we have seen the pooling thing. Pooling was used to compress the size of feature, and the pooling was actually reducing the dimension of input feature. So that will speed up the operation of convolutional neural network. After that, after having everything or after having this kind of structure, it's possible to add multiple convolutional layers, multiple pooling layers, and of course multiple ReLU activation functions.
After this, we have used flattening layer, and the job of flattening layer was to convert two-dimensional features into one-dimensional vector or an array, and that was applied to fully connected neural network having three different stages: input layer, middle layer, and the output layer. So the features of input image will be applied to the input layer, and after that, that will propagate through the middle layer, and at the output side we'll have the number of neurons. The output neurons will be exactly equals to the number of categories we are having. For example, if I have to classify brain tumor, whether there is tumor or not tumor, in that case there are only two categories, so output neurons will be equal to 2, and the number of input neurons depends on the number of features that we are extracting from the input image. And after that, there will be a softmax function that was actually generating the outcome, and that was predicting the output, which category is having the maximum probability. That was predicted by the softmax layer. So in this particular case, you can see here the boat, house, tree, and the cat. As per the boat is concerned, its probability is 0.04. That means only 4% is the probability that the given image is the boat image. Now there is 0.05%. That means only 5% is the chances that the given image is house, and 9%, 0.9, that means 90% chances are there, or the probability is there, that the given applied input image is the tree, and that's the maximum probability we are getting for the tree. So this was the problem statement identifying whether the input image is boat, house, tree, and cat, and that was done using this kind of probabilities, and these probabilities can be calculated, and finally the softmax activation function will predict which is the maximum, or which object is having the highest probability, and that will be identified as an object, or that will be a recognized object from the input image. So this is how we can use, and the same principles can be applied whether somebody is having the mask or not. So mask detection can be done over here. It can be used for the face recognition also. So we can do a face recognition system using this kind of architecture. It can be used to detect the leaf diseases occurring on the plant. It can be used to detect lung cancer. It can be used to detect brain tumor. It can be used to detect leukemia, blood cancer, or any other cancer. Or it can be used to detect chronic kidney disease if the ultrasound of kidney is input to the system. It will also be used to judge the quality of fruits or the quality of food. If we are having such database, we can train our model, and the quality, fruit quality, can be judged or can be identified. It can also be used to sort different fruits, so we can apply a data set of different fruits, and at the end we can predict the type of fruit. It can also be used to identify the medicinal plants. So if you are having the data set of different plants, and by you need to identify the type of that plant, then immediately by capturing the photograph of that plant, you will be able to identify which plant it is. So this, there can be n number of possibilities, n number of opportunities where this convolutional neural network can be used, and this is the most accurate algorithm for the image classification. We have seen the text data, we have seen the numeric data, and we have seen different algorithms that were used to classify the textual data and the numeric information. This time we are talking about convolutional neural networks to classify images, to recognize some diseases based on the images. So this will be an image classification system. So number one thing that is required in order to have the classification is the data set. Without data set, you can't go forward. You actually can't train the model. So the data set is important. In previous cases also, we used to have a data set. We have seen so many different projects
There we have seen data, sometimes salary prediction, sometimes whether the particular person is going to purchase the car or not, that purchase prediction. Also we have seen the SMS spam detection. So we used to have a data set. So here again, in order to identify whether the given CT scan or the MRI scan is having the tumor or it's the normal CT scan or MRI scan, we need a database. And the database can be downloaded from various sources that I have listed initially while discussing the machine learning. So there are so many data set resources from which we can download the dataset, and once the dataset is downloaded, we can use such datasets in our machine learning algorithms. Now, this is how the dataset can be downloaded from. This is the web address from which you can actually. Kaggle is the one of the popular website which is hosting the so many data sets, and you can search there. You can basically actually browse for the number of data sets and whatever data set you need. And once you search data set on this website, you will be able to download that data set. It sometimes the data sets are in the form of images, for the if you are considering the CNN kind of algorithms. Sometimes the data set can be in the form of CSV files if you consider the previous projects and our previous approaches. So for this approach, we need an image-based dataset. So we'll search for the brain tumor dataset, and this is the brain MRI images for brain tumor detection, and that's having only two categories. Otherwise, I'll also show you that on the web address. So here it is. This is the link that I have opened. So this is brain MRI images for brain tumor detection, and you can see here this the size of this dataset is around 9 MB, so it's quite small size. But in most of the time you will see the datasets are having hundreds of MBs, sometimes in terms of GBs, because the images are there. And we are having this kind of two folders are there. One is no and other one is s kind of folder. So whatever images are there in the no folder, you will find that all these images are not having the brain tumor. These are perfectly normal MRI scans. And if you consider the other images called s, and whatever images you will find here, they will be having some sort of tumor. And we will train our machine learning model or this deep learning algorithm. CNN is the deep learning algorithm basically on this data set, and once it is trained, it will be capable of understanding or finding out whether the given MRI scan or the CT scan contains the brain tumor or it's perfectly normal MRI scan. And once we design the system, that will be very much easy, and that will be a very interesting thing. What we can do with that, in that case, we can design a web application for that, and anybody can apply or anybody can upload his or her MRI scan to our portal, and our portal will respond whether that particular person is having the brain tumor or not. So that will be a very interesting thing that we can do using once we study or once we understand this algorithm. So this is how the images can be downloaded, and once you download, we can put in the folder. So what tools we need? Number one thing is the VS Code that is already we are having. Sometimes Google Colab. Now the Google Colab is another platform which is Jupyter notebook based platform for programming in Python, and it is cloud based platform, and it is from the Google. And secondly, all the libraries that you will need in your project, maybe TensorFlow, Keras, or maybe for the machine learning, that all are previously installed on that platform. So you need not to pip install the libraries. You will find that most of this stuff is already preloaded in Google Colab platform. So that's the advantage of that. And secondly, most of the time we struggle when we start our journey learning the machine learning, learning Python, and this data science courses, that sometimes we don't have the high configuration laptops and computers. So this Google Colabs helps you to run your code on cloud. So the GPU requirement or maybe CPU requirement, whatever is there for your projects, that will be satisfied by the Google, and the Google will provide its own GPUs and CPUs for you, so you can actually start implementing
this Python codes and machine learning and deep learning algorithms on Colab. Secondly, teachable machine is the programming less platform which is used for image classification, audio classification, and that is again the platform for those who don't have programming skill and still want to design a product which is implementing the deep learning algorithms, and still want to implement, let's say, face recognition system, emotion recognition system. This is completely programming less platform where you need not to write not even a single line code, drag and drop kind of platform. Just you upload the images and that's all, and after that you will be ready to use your model to recognize the real world thing. So that's also we are going to understand, and we can also train our model using this teachable machine, and that we can use in the Python codes. That's what we can study. And the Python 3.8, which is already having, and the TensorFlow Keras library. Now, the TensorFlow Keras are the libraries which will be supporting the deep learning functions, deep learning libraries, and of course the CNN algorithm. The functions related to the CNN can be loaded from this libraries. And the OpenCV, open source computer vision library, which is generally used for the image processing. And subsequently, this Pilo and iMutil, these are another few libraries which are used for image processing. And these libraries, we can take help of all such libraries and to implement the convolutional neural network. So before that, it's very important to understand how the image can be loaded in the computer, how to see the image, how to convert that image into grayscale, maybe black and white, or maybe how we can actually load that image and display in the Python environment. So we'll understand how to read the image, how to display image, how to convert red, green, blue image. Sorry, there is some spelling error over here. There should be it is RBG, instead of that it should be RGB image, red, green, blue image into grayscale format. And at the end, how to threshold that image to find out the region of interest, the interested region from that particular image. So that will be a thresholding operation that we'll see. So these are the simple steps that we're going to see, and how to handle image at Python. That's what we're going to understand first. Now, as far as image read and display is concerned, there is a simple library in Python called OpenCV, and that will be loaded like this. OpenCV, or that will be import CV2 like this. And once this library is loaded in Python, if you want to read any image, then you can read it by like this cv2.imread, and then the name of the image that you want to load, provided that this image in the current folder and the code, Python code and image are in the same folder. But if they are in different folders, then that could be a different thing. Okay, so this is how the image will be there, and then cv2 im show, then this will be showing or displaying the image, and the title of the windows or window that will open, that will be image, and what to display, this image. And after that, cv2.wait key. So this will wait for this many seconds, whatever number of seconds or the milliseconds mentioned over here, that amount of time it will wait to display the image, and after that we can destroy all the windows. So it will wait for the key press, and once the key is pressed, the windows will be destroyed. Whatever the image is open, that will be destroyed. So that's what we can do. For RGB to gray conversion, there is a simple function called color to BGR to gray. That's what we're going to use, and that will implement in the practical. And for the thresholding purpose, we can use this cv2.thresh binary, so that we can convert our image to binary or the thresholding apply. So we will load the color image, and once the color image is loaded, that will convert to grayscale format, and then we will convert to binary, that means black and white format, and we will try to extract the interested region or the important object from that image. Now for that let me show you some image. So this is the image that I want to show you. So this image is the MRI scan of a patient's brain, and this may look like this one.
Now you see here the region of interest is this is the tumor, where this is actually a tumor. This red colored region over here is the tumor that we want to extract. Now this color image is having this information. So final objective is to extract this portion, and the rest of the part should be black in color, and only this area should be white in color, and the rest of the portion has to be black. That is the objective. Now, for that purpose, we may convert this into grayscale format, then binary. Now, why binary? Because we need this object to be black or white, and the rest of the portion should be black. If this is white, the rest of the portion should be black. In that case, it will be a binary image or the black and white image. And if the image is black and white, that means we are having only two things. One is the object that we want to recognize from that image, and other one is the background. So this entire thing will be a background, and this is the tumor, which is the object, which will be a object of interest, and this will be a region of interest. And finally, once you know the tumor, once you obtain this tumor, you can measure the dimensions of the tumor, and you can predict how what is the size of the tumor this is having, and that can be done using the some image processing technique. Okay, so that's what we are going to do. So I will be opening the Python or the Visual Studio Code in this folder, and once it is open, I am having this image in front of me, and this is actually a brain tumor image. And now our objective is to convert this image into a grayscale, and then to the binary version of this image. And once I will get the binary version of this image, I can see the this object, the central region, is quite white, and the rest of the stuff is black in nature. Okay, so that's what we are going to do. This will be a bt.jpg, that means brain tumor.jpg. So I'll create a new Python file, and I'll name it as image handling.py. And a little bit I'll be zooming in this area. Now, number one thing that I need to do is importing the library. So import the very first library is cb2. So that's the computer vision library. And if you want to check whether this library is there in your environment, you can simply run this. And in order to do this, you need to install three different libraries. So for that, there is a command called pip install opencv-python. Okay, before actually you start with this, you will have to install all such libraries. Now first library is opencv.python dash python. And if you want to install multiple libraries here, that also you can do. And in order to install the multiple libraries, what you will have to do, you will have to actually just give a space over here. After giving space, sorry, not there, it should be here, you just type the second library. Now my second library is TensorFlow, and my third library is Keras. Now next is Pillow. Okay, these are the libraries that I want to install in my Python environment. So you can just give some spaces, and you can type multiple libraries, and in single pip install command, it will be installing all your libraries. Okay, like this. Now, as in my case, the all the libraries were already there. I have already installed all these libraries, so there is no problem, and it's showing requirements already satisfied. But in your case, it will download the libraries and it will install. As far as the TensorFlow is concerned, it's around 450 MB is the size of that library. If you consider OpenCV, it's around 30 to 35 MB is the size of that library. So based on such sizes, it will take some time to install these libraries. Maybe 10-15 minutes it will take to download and install TensorFlow, Keras libraries in your Python environment. Now, number one thing that I'm going to do, or I'll be doing over here, is loading the image that I want to load. Now, first of all, let's load img as a variable name, then cv2 dot imread function, imread, and then I need to give the file name, and this time bt.jpg. That's the file name I want to load over here. Now,
Next is I want to actually show this image. Whatever loaded image is there, I need to show that image. Now, for that purpose, there is a function called cv2.imshow. Imshow means image show. And what is imread? Image read. And as soon as you type this cv.imshow, it will be showing the win name. That means the window name. That's what you want to do. So whatever the image you want to show, what will be the name to that image? So let's say I will give original image. That this is how the original image will look like. And what you want to show? I want to show this img variable or this matrix. This is the matrix, the img variable that I have loaded, and in that I have stored the image, and that I will be displaying over here. Now in order to show this for a while, cv2 dot wait key function. Now what is this wait key function? It will wait for a key press so that this window, whatever window is there, that will be there and that will be displayed on the screen as long as you press some key from the keyboard. So once you press some key from your keyboard, this window can be destroyed. After that, we can destroy, or you can write some instruction to destroy that uh, uh, image. That's what we have seen in the PPT. So that we can do, but let it be. We don't want to do that, so I'll be doing like this only. So after running this, I must see the image. Now this is how the image can be loaded in our Python environment, and this is our the title of our image, original image. Okay, that's what we have given over here, original image. And this image is now being displayed in the Python. So this is how we can actually load any image from our computer. This image is stored in some different location in your Python or in your computer, in that case you will have to give the complete path of that image instead of just bt.jpg. Maybe it's in D drive, so you should copy the complete path of that image, and then you can give or you can type over here and you can load that image, and you can definitely display that particular image. This is a very simple line, only 2 lines of code display the image in Python. Now the next important thing, as we have displayed the image, let's convert this image into a grayscale format, and let's see, this was the color image. Now let's see how the grayscale image will look like. Now for that purpose, I'll create a variable called gray, and this will be cv2 dot, there is a function called cvt color, and then you need to mention the source. Source means which image you have to convert into some color format. So I want to convert this img variable. That's my original image, right? And the code you have to mention over here. So the code can be whether it is the grayscale or maybe HSV. There can be another thing. So cv2 dot, I want to change the color of this image. So color, and you can see here once I choose the color, there is so many options. Now if I make underscore, now here you see there are number of options, the color, bare, and all those things. But we are actually talking about bgr to gray. Okay, that's what we are interested. So that will be a bgr to gray, and this is the function, color bgr to gray. That's what we need. And of course there are some different color models are also there. So this is the bgr, that means blue, green, red, or rgb. That's what we call it as. So that's the color model of image, that is the image in the rgb format. That means red, green, and blue. That's the primary color in that format. And the gray is another space where the image can be represented, and that will be a grayscale image, and the colors will go away and only will get the grayscale image. Now in order to display that, again cv2 dot imshow, and of course the file name or the window name that we want to show over here, so that will be a grayscale image. So this time I'll give name as grayscale image, right? And the metrics, now this time I'll be displaying gray image.
and at the end again cb2 dot wait key function. Okay, so that it will again wait for any key press, and as long as that, so this will be displayed over there. So now we'll see whether we are getting the color image, and after that we are getting the grayscale image. So let's run. Now first of all we are getting here, this is the color image, what we can see here. Once you close this image, okay, so there is some problem. Yeah, is the problem with the name of the variable. Here I'm using Gary, and actually in the below code I'm using Gray, so this name has to be same. So that was the problem. Now let's run again. This is the color image, that is what we are getting. And after closing this image, now we'll get the grayscale version of our image. Now this is the grayscale version. Now you can see here the colors are now gone, and now we are getting only grayscale image for this. Now let's see how we can convert this image into a black and white image, and for that purpose we'll be using the thresholding thing. Okay, now we can use the threshold. Now for that purpose a binary threshold can be applied, and that threshold image will be able to use here. Now in order to do that, there is a function called cv2 dot threshold, and here number of types or number of parameters you will have to pass over here. Now first of all the threshold source. Now the source is the grayscale image that I want to make it the threshold, and what will be the threshold value. Now as it is the grayscale image, it will be having the values between 0 to 255. So what will be a threshold level? So it will be 127. Let's say it can be user defined. And what is the max level? So max level, as you know, it's 255. And what will be the type? Now type will be threshold binary, because I need to convert, sorry, it will be cv2 first of all, that is required, cv2 dot thresh binary. Okay, now let's understand each and every parameter of this function. Now first of all there is a gray. Now gray is the input image on which the thresholding we are going to apply. Now thresholding is all about converting any image to a binary form. Then the second is the threshold value. Now threshold value is above this level everything will be converted to white, and below this level everything will be converted to black. इसका मतलब है कि इस इमेज के अंदर 0 से लेकर 255 तक कलर है. दैट मीन्स 0 मीन्स ब्लैक कलर है, 255 मतलब व्हाइट कलर है. तो ये 0 से 255 का जो कंप्लीट रेंज है, इसको हमें सिर्फ दो कलर्स में रिप्रेजेंट करना है. कितने कलर्स में? सिर्फ दो कलर्स में. तो दो कलर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोई तो एक सेंट्रल वैल्यू या फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू पकड़ना होगा कि इसके ऊपर के अगर कोई भी कलर्स उस इमेज के अंदर होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे व्हाइट कलर को, और इसके नीचे अगर कुछ कलर्स होंगे या फिर इंटेंसिटीज होंगी तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक किए जाएंगे. तो इसका मतलब है 127 मैंने थ्रेशोल्ड पॉइंट लिया, विच इज द सेंटर वैल्यू. इफ यू कंसीडर 256 नंबर ऑफ कलर्स डिवाइड बाय 2, दैट विल अराउंड 127. तो ये सेंटर वैल्यू मैंने कंसीडर किया. तो इसके ऊपर के जो भी इंटेंसिटीज है, जो भी कलर्स हैं, वो सारे के सारे अभी व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसके नीचे के जितने भी कलर्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड टू ब्लैक कलर. तो यहाँ पे 127 हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू पकड़ा. तो मैक्स इंटेंसिटी, दिस मैक्स वैल्यू क्या है? 255 मैक्स है, क्योंकि ये 8 बिट इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, तो इसका मैक्स वैल्यू होगा 255. तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि थ्रेशोल्ड बाइनरी होगा, थ्रेशोल्ड बाइनरी इन्वर्जन भी है. तो इन दैट केस इन्वर्जन किया तो जो बाइनरी थ्रेशोल्ड करके अगर जो ऑब्जेक्ट ब्लैक है वो व्हाइट बनेगा, वो व्हाइट है. तो बाइनरी मतलब टू कलर्स में अभी यहाँ पे थ्रेशोल्ड अप्लाई किया जाएगा, एंड हियर वी विल बी गेटिंग द ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन ऑफ आवर इमेज. तो ये सब कुछ कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे ये रिटर्न भी करेगा. So it should be returning this value, and that can be stored in some variable. Now we can create some variable. तो यहाँ पे मैं
थ्रेश करके एक वेरिएबल देता हूँ। लेकिन दिस फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इट इज रिटर्निंग टू डिफरेंट वैल्यूज। नंबर वन इज RET एंड नंबर वन टू इज थ्रेश। नाउ थ्रेश तो वो है जिसके अंदर ये थ्रेशोल्डिंग होके बाइनरी इमेज, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है वो इसके अंदर स्टोर होगी। और RET एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू नॉन निगेटिव होगा या फिर नॉन जीरो होगा इफ दिस ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अगर थ्रेशोल्डिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो RET का वैल्यू 1 होगा, दैट मीन इज सक्सेस। और अगर RET का वैल्यू 0 है, that means the thresholding operation is not successful, so there can be a problem with this input image। तो ये इमेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम, तो ये एक वेरिएबल है जो कि स्टेटस है वो रिटर्न करेगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत हमें है नहीं। डिबगिंग के लिए डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो फिर से अगर मुझे यहाँ पे उस इमेज को डिस्प्ले करना होगा तो cv2 डॉट imshow, और यहाँ पे मैं एक नेम दूंगा जिसके अंदर मुझे ये शो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, दैट विल बी अ टाइटल ऑफ द विंडो। और क्या डिस्प्ले करना है मुझे? थ्रेश दिस इमेज, एंड ऑफ कोर्स एंड द एंड cv2 dot wait key function, so that will wait for some time. Now let's run. So after running, we will be firstly getting the color image. After closing that image, we will be getting the grayscale image, and this is the tumor region which is quite black, and the rest of the stuff is quite white. After closing that, now here is the difference. Now you can see here, now the most of the part is now converted to the white color, and if you see here the tumor wall region, that's only the blackish part you are getting over here, and this is actually a tumor. So this, by extracting this part, now further this image can be processed, it can be filtered for noise. So these small black points can be removed, and this the entire this is as a noise, this is not the tumor actually, but it is looking black, so that can be filtered. So some image dilation operation, or can be the noise filtering can be applied to this image, and this tumor volar region can be extracted. And once the tumor is extracted, its dimensions can be measured. Okay, so this is what the image processing can be. And now as far as this thresholding is concerned, if you consider the cb2 dot thresh voila function, so you see there are number of operations for the threshold. So if you consider this binary, the result what currently we obtain, that will be the result of this binary. If you see the binary inversion voila thing, the result will be slightly different, it will be an inverted operation. If you run, you see here this is the original image first of all we'll be getting, and after closing the original image we'll be getting the grayscale image, that's the image. And after closing that we will not now get this as a tumor region. So now here everything it will try to convert into a black part, and only the tumor will be void. In the previous case the tumor was in the black and the rest of the part was white, but this time it is like this. So this is how the basic image handling can be done, basic image pre-processing can be done. And after pre-processing, you can directly consider all such images for the CNN algorithm. Though the CNN does not need any kind of thresholding, binary conversion, and this kind of stuff, but you can, in order to enhance the accuracy of CNN model, you can definitely go with this binary operation. Now, next and important thing that we are going to consider is the implementation of CNN algorithm in Python. And for that purpose, we are going to use the dataset, and that dataset will be downloading from the link. And the previously, after a few minutes ago, I have shown you the link for the dataset from which you will be able to download that dataset. And once you can download that data, once you download that dataset in your Python environment, you will be able to use your dataset. Now I have already downloaded that dataset, and that dataset I have stored in the folder my data.
Now that's the folder I have created. You may create any different folder. You just give dataset as the name to your folder. That's totally fine. And what I have done, I have manually sorted my data set into two different sets. One is training set and another is the test set. And if you see, if I open the training set, there are again two subfolders. Now one is brain tumor. Inside that, all such images are there having the brain tumor, and so many images are there. If you see the number of images, total 155 number of images are there in case of this brain tumor folder. And in the training folder itself, there is another folder called normal folder. And if you see the normal folder, inside that again I am having so many images. And if you see, there are around 98 number of images are there in the folder. So I will segregate my data in terms of the training set and the test set. And in the training set, I will be creating two subfolders, brain tumor and normal. So whatever number of categories are there, उतने number of folders आपको यहाँ पे create करने होंगे. अगर मेरे दो folder है, दो categories है तो दो folder होंगे, चार categories होंगी तो चार folder होंगे, पांच कैटेगरीज होंगी तो डेफिनेटली वहां पे पांच फोल्डर होना ही होना है. तो यहाँ पे दो ही कैटेगरीज थी तो दो फोल्डर यहाँ पे होंगे, राइट. तो इसके अलावा आई विल बी क्रिएटिंग अ टेस्ट सेट एज वेल. तो टेस्ट सेट के अंदर भी वही सब चीजें होंगी, लेकिन अगर अपने ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर 80% डेटा है तो आपका टेस्ट फोल्डर के अंदर 20% ही डेटा होगा. तो अगर टेस्ट फोल्डर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कम डेटा है. वहाँ पे अगर 155 नंबर ऑफ इमेजेस थे तो यहाँ पे अराउंड 47 नंबर ऑफ इमेजेस रफली है. कोई ऐसे स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है नहीं कि आप एग्जैक्टली 70%, एग्जैक्टली 80%, एग्जैक्टली 20%, ऐसे कुछ है नहीं. कम ज्यादा हो सकता है. इट कैन बी 71%, 80%. तो रफली अराउंड 80% डेटा, 70% डेटा यू हैव टू पुट इन अ ट्रेनिंग सेट, और रिमेनिंग 20% डेटा, 30% डेटा इन द टेस्ट सेट. वही नॉर्मल फोल्डर के अंदर भी कम डेटा है. यहाँ पे 25 नंबर ऑफ इमेजेस है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कंसिडर करोगे ट्रेनिंग सेट, वहाँ पे 98 इमेजेस थी नॉर्मल के अंदर, तो यहाँ पे उसके कंपेरेटिवली 25% का या फिर 30% जो भी काउंट होगा, तो 25 नंबर ऑफ इमेजेस आई हैव प्लेस्ड इन द नॉर्मल फोल्डर. तो पहली चीज आपको क्या करनी है कि कैगल से डेटा सेट डाउनलोड करना है. डाउनलोड करके आपको ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट बनाना है. ट्रेनिंग सेट के अंदर भी दो फोल्डर होंगे और टेस्ट सेट के अंदर भी वही दो फोल्डर होंगे, लेकिन ट्रेनिंग सेट के अंदर आपका 80% डेटा चला जाएगा और टेस्टिंग सेट के अंदर आपका 20% ही डेटा रहेगा. तो ये सब आप करोगे और ये फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे. सो वंस यू क्रिएट दैट फोल्डर, आप यहाँ पे एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाओगे इन दी VS कोड एनवायरमेंट, और जिसको नाम आप दोगे CNN_train, क्योंकि ये ट्रेनिंग का कोड होगा. तो CNN_train, दैट्स इट. तो ये ट्रेनिंग वाला कोड होगा. तो इसके अंदर आप CNN को, ट्रेनिंग का जो भी कोड है, ट्रेनिंग करने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे. और जो भी ट्रेनिंग का फंक्शंस होंगे, जो भी ट्रेनिंग के लाइब्रेरीज होंगे, वो सारे लाइब्रेरीज अब हम यहाँ पे लोड करेंगे. और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे, और वही स्टेप्स जो हम प्रीवियसली फॉलो करते आए हैं, एग्जैक्टली वही स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो भी करेंगे. तो नंबर वन थिंग है, स्टेप नंबर वन, एंड दैट्स द लोडिंग द पैकेजेस जो हमें चाहिए. तो जितने भी पैकेजेस हमें चाहिए होंगे, जितने भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हमें चाहिए होंगी, वो सारी लाइब्रेरीज, वो सारे पैकेजेस अभी हम यहाँ पे लोड करेंगे. और उन सारे पैकेजेस में से बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो हम यूज कर पाएंगे टू बिल्ड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा, आई विल बी टाइपिंग द नंबर ऑफ पैकेजेस. ना पहला इंपॉर्टेंट पैकेज है वो है केरास, जो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है. सो केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग, this is the library, keras dot pre processing dot image. Okay, so next is the image is the name of the sub module.
So that will be image import. नाउ आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर पाओगे. तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन इमेज डेटा जनरेटेड दैट विल बी यूज टू जनरेट डेटा आउट ऑफ आवर इमेजेस. सो इमेज डेटा जनरेटर दैट्स ऑल. तो ये पहला चीज़ हम यहाँ पे करेंगे. तो ये जो इमेज डेटा जनरेटर है वो हम यूज़ कर पाएंगे इमेजेस को जनरेट करने के लिए या फिर इमेज ऑगमेंट करने के लिए. आगे चल के हम देखेंगे व्हाइल यूजिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. नाउ नेक्स्ट इज CNN मॉडल के बारे में थोड़ा सोचेंगे. केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट sequential convolutional neural network. So this is for the CNN model. तो यहाँ पे using this you will be able to create a CNN model. तो convolutional neural network हम यहाँ से बनाएंगे इस वाली लाइब्रेरी को यूज करके. नाउ ये तो हो गया कि ठीक है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का हम फंक्शन या फिर वो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं. तो इसके बाद हमें कन्वोल्यूशन लेयर चाहिए होंगी, फिर पूलिंग चाहिए होगा, फिर रेलू चाहिए होगा, एक्टिवेशन चाहिए होगा, वो सब कहाँ से आएगा. तो अगेन उसके लिए है केरास डॉट लेयर्स लाइब्रेरी. और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कन्वोल्यूशन. तो कन्वोल्यूशन 2D चाहिए हमें. तो 2D 1D 3D सब कुछ है यहाँ पे. देन मैक्स पूलिंग चाहिए मुझे. तो मैक्स पूलिंग 2D चाहिए. तो क्योंकि 2D इमेजेस है 2D, तो ये सारे ये दो होंगे हमारे फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए होंगे ये सारे लाइब्रेरीज. उसके बाद हम एक्टिवेशन फ्लैटनिंग लेयर वो सारे या फिर फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के भी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. तो ये कन्वोल्यूशन और पूलिंग का हो गया. अभी तक हमने रेलू वगैरह के लिए कुछ मेंशन नहीं किया, सॉफ्ट मैक्स के लिए कुछ मेंशन नहीं किया, या फिर फ्लैटनिंग के लिए कुछ नहीं है, फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के लिए कुछ मेंशन नहीं किया. तो वो अब यहाँ से करेंगे. सो केरास डॉट लेयर्स अगेन द सेम लाइब्रेरी एंड इंपोर्ट. आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए है और अभी मैं इंपोर्ट करूंगा वो हमारा मोस्टली होगा क्लासिफिकेशन स्टेज के लिए न्यूरल नेटवर्क का. तो यहाँ पे रेलू और सॉफ्ट मैक्स के लिए क्योंकि ये एक्टिवेशन फंक्शन इनको बोला जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए है एक्टिवेशन. देन ड्रॉप आउट एक है. तो ओवरफिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अवॉइड करने के लिए ड्रॉप आउट जनरली यूज होता है. उसके बाद फ्लैटनिंग आपको पता है, तो फ्लैटनिंग के लिए फ्लैटन है. एंड फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हमें यूज करना है, तो उसके लिए है डेंस. तो इतने सारे लाइब्रेरीज अब हम इंपोर्ट कर पाए हैं और यहाँ पे हमने बोला है कि कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग ये सब कुछ हमें लगेगा किस लिए, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. और एक्टिवेशन ड्रॉप आउट फ्लैटनिंग डेंस ये सब कुछ हमें लगेगा क्लासिफिकेशन स्टेज के लिए. तो ये सब कुछ हो गया. तो अगेन वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द केरास बैकएंड. केरास, so from keras import backend as k. तो ये जनरली केरास बैकएंड है एंड दैट विल बी नाउ इंपोर्टेड एज के, सो विल बी यूजिंग इट एज के. तो ये जनरली इमेज जो है किस फॉर्मेट में है, डेटा फॉर्मेट क्या यूज कर रहा है इमेज का, केरास के बैकएंड में डेटा फॉर्मेट क्या यूज होता है. तो वो डेटा फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब कलर इमेज होंगी तो उसके विड्थ हाइट एंड देन चैनल है, या फिर चैनल फर्स्ट है एंड देन विड्थ एंड हाइट. सो इन द प्रोग्रामिंग विल डिस्कस, उसके बाद आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है. एंड देन द ऑप्टिमाइजर्स आल्सो वी आर गोइंग टू import to optimize our कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. सो ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो भी हम देखेंगे शॉर्टली. तो यहाँ पे हम लोड करेंगे ऑप्टिमाइजर. सो एट लीस्ट इतना सब कुछ हमें चाहिए होगा ये सब कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए. ना ऑप्टिमाइजर विल डिफाइन कि लर्निंग रेट क्या होगा हमारे न्यूरल नेटवर्क का, एंड देन कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे ट्रेनिंग करने के लिए. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. सो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ ये हो गया सब कुछ. तो नाउ विल डिफाइन सम वेरिएबल्स in this section. So that will be few variables that will be used
इन द प्रोग्रामिंग। सो ट्रेनिंग वेरिएबल्स होंगे, कुछ डेटा डायरेक्टरी के वेरिएबल्स होंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि इमेज का विड्थ क्या होगा, एंड देन ऑफ कोर्स विल डिफाइन कि इमेज का हाइट क्या होगा। तो ये वेरिएबल्स नेम है, इट्स ऑल अबाउट द यूजर डिफाइंड। एंड लेट्स से आई गिव इट 224 बाय 224। तो जनरली हमारा जो भी डेटा सेट होगा, वो डेटा सेट अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। तो क्या सारी इमेजेस की साइज सेम होगी? क्या सारी इमेजेस का विड्थ एंड हाइट सेम होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि इमेजेस गूगल से डाउनलोड की जा सकती है, वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट की जा सकती है, वेरियस हॉस्पिटल्स का डेटा हो सकता है, वो सब कुछ मर्ज करके एक फाइनल डेटा सेट में भी बन गया है। तो सब कुछ सेम तो नहीं होगा, किसी के इमेजेस के साइजेस बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे। तो हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड साइज जो कि कुछ भी हो सकता है। नाउ आई एम टेकिंग 224 बाय 224, आप उसका कुछ और भी ले सकते हो। 256 बाय 256 ले सकते हो, 64 बाय 64 ले सकते हो, 512 बाय 512 ले सकते हो। आप स्क्वायर इमेज भी ले सकते हो, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का भी ले सकते हो, जिसका मतलब जिसमें हाइट एंड विड्थ सेम ना हो। तो ये अप टू यू है कि आप इमेज का साइज क्या लोगे। और ये एक तो आप पे भी डिपेंड है, एंड सेकेंडली एक्यूरेसी पे भी डिपेंड है। अगर आपने इमेज का साइज छोटा कर लिया और उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट वहां से खत्म हो रहा है, तो इन दैट केस आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी काफी कम आ रही है। तो वो उस पे भी डिपेंड है। इमेज का साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली ट्रेनिंग का टाइम भी ज्यादा होगा, और इमेज का साइज अगर कम है तो ट्रेनिंग का टाइम भी कम ही होगा। लेकिन इमेज का साइज अगर एक्चुअल है जितना है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो इंटैक्ट रहेगा, कोई उसमें हार्म नहीं। लेकिन इमेज का साइज अगर आपने छोटा किया, कंप्रेस किया, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन उसमें का लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, लेट इट बी। तो मैं यहाँ पे 224 बाय 224 रखता हूँ। ये मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि गूगल का टीचेबल मशीन जो प्लेटफॉर्म है जो हम यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी इमेज का हाइट एंड विड्थ 224 बाय 224 ही होता है। तो उससे मेल खाने के लिए यही फॉर्मेट हम यहाँ पे रखेंगे ना। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि आप जो ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो उसका डेटा डायरेक्टरी, ये वेरिएबल नेम है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरिएबल नेम, यूजर डिफाइंड है, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। तो इसका डायरेक्टरी क्या है? माय डेटा करके एक फोल्डर है, उसके अंदर ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है। अगर आपने कुछ और फोल्डर बनाया तो आप उसका नाम दे दो, मैंने ये बनाया तो आई विल बी गिविंग दिस नेम। सिमिलरली वैलिडेशन, वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर डायरेक्टरी, इस नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो अभी ये जो वैलिडेशन का डायरेक्टरी है वो क्या है? माय डेटा है करके एक फोल्डर है, उसके अंदर है टेस्ट अंडरस्कोर सेट, तो ये मेरा उसका डायरेक्टरी। तो ये कुछ वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हम कहाँ से क्या लेने वाले हैं। नेक्स्ट इज number of train samples. Again, this is variable name, so it can be anything. So samples, कितने हैं ट्रेनिंग के सैंपल्स वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल्स या फिर वैलिडेशन सैंपल्स, तो वो कितने हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, और वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा इस वाले फोल्डर्स के अंदर, फिर ट्रेनिंग सेट के अंदर जाना होगा। ब्रेन ट्यूमर के अंदर कितने हैं? तो यहाँ पे 155 है। नॉर्मल के कितने हैं? तो नॉर्मल के 98 है। तो 155 प्लस 98, सो दैट विल बी अराउंड 273 होगा। ओके, सो इट विल बी अराउंड 273। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सैंपल्स कितने हैं अपने? 273 ट्रेनिंग सैंपल्स है। सिमिलरली मैं टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर जाऊंगा और टेस्ट डेटा सेट के अंदर, एंड देन आई कैलकुलेट कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं। तो ये 25 नॉर्मल के अंदर है, और ब्रेन ट्यूमर के अंदर अराउंड है 47। सो 47 plus that 25, that's around 72। okay, so that will be 72। तो इतने नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो जितने हैं उतने आपको मेंशन करना है। तो टेस्टिंग सैंपल 72 है, ट्रेनिंग सैंपल्स है 273, दैट्स इट। ओके, तो यहां तक वेरी सिंपल है, यहां तक हम आ चुके हैं। अभी हमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर मेंशन करना है, वो है इपोक्स। वो कितने हैं?
तो मैं यहाँ पे epochs अभी फॉर टेस्टिंग पर्पस 5 रख देता हूँ, लेकिन 25 epochs अ, एक रिकमेंडेड है, वहां तक हम जा सकते हैं। हम देखेंगे कितनी एक्यूरेसी मिलती है। एंड बैच साइज, तो ये पैरामीटर अभी थोड़े नए हैं, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बैच साइज लेट इट बी 16 ओनली। तो इपोक का मतलब है कि कितने टाइम्स, कितने इटरेशंस, कितने राउंड्स, कितने टाइम्स आप आपका ट्रेनिंग डेटा फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को दोगे या फिर फुल्ली न्यूरल नेटवर्क वो देखेगा। एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स। तो इसका मतलब है मेरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर जितने भी इमेजेस है, वो सारी की सारी इमेजेस एटलीस्ट 5 टाइम्स यूज की जाएंगी इन फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। मतलब फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के जो वेट एडजस्टमेंट है, एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर, कि अगर हम उसको ब्रेन ट्यूमर वाला इमेज देंगे तो हम देखेंगे कि सुपरवाइज करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर वाला जो भी आउटकम है वो मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो मैक्सिमम नहीं आ रहा है तो हम उसके वेट एंड बायसेस को एडजस्ट करेंगे, वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो ये इस तरह से हम एक के बाद एक इमेजेस उसको अप्लाई करते रहेंगे, एंड वो नेटवर्क उसके पैरामीटर्स अपडेट करता रहेगा। तो एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स आपके सारे इमेजेस उसके अंदर है वो उसको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे उसका वैल्यू है 5। तो इसका मतलब है 5 इटरेशंस होंगे, 5 टाइम्स मैं उसको ट्रेन करूंगा, 5 टाइम्स मेरा डेटा यूज किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ इपोक्स। उसके बाद है बैच साइज। बैच का मतलब है लॉट। इसका मतलब है कि एक टाइम में आप कितने इमेजेस कंसिडर करोगे, या एक टाइम में कितने इमेज का बैच बनाओगे, या फिर ट्रेनिंग के लिए एट ए टाइम कितने इमेजेस आप लोगे। तो एट ए टाइम मैं 16 इमेजेस लूंगा। तो अगर मेरी बैच साइज लेट से 10 है और नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, 100 से, तो इसका मतलब है स्टेप्स पर इपोक्स क्या हो गया, एक इपोक कंप्लीट होने के लिए मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 100 है। तो इसका मतलब है कि 100 इमेजेस यूज की जाएंगी ट्रेनिंग। तो एक इपोक कंप्लीट होने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, तो 10 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि बैच साइज 10 है। इसका मतलब है एक बैच के अंदर एट ए टाइम 10 इमेजेस को प्रोसेस किया जाएगा। तो अगर 10 इमेजेस को प्रोसेस किया जा रहा है तो 10 इपोक्स में या फिर 10 स्टेप्स में एक इपोक, एक ट्रेनिंग का राउंड कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना बैच साइज। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि केरास के बैक एंड में इमेज का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से है। जिस तरह से उसका फॉर्मेट है उस तरह से हम वो इमेज का शेप करके एक फंक्शन बनाएंगे, उसको हम यूज करेंगे। तो इफ ए डॉट के मतलब वो केरास का बैकएंड जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इमेज डेटा फॉर्मेट, इमेज का डेटा फॉर्मेट क्या है, इफ इट इक्वल्स टू चैनल्स फर्स्ट, चैनल्स अंडरस्कोर फर्स्ट, तो इन दैट केस इनपुट या फिर इमेज का जो शेप है वो हम इस तरह से होगा। चैनल मतलब कितने चैनल है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, 3 चैनल है। तो चैनल फर्स्ट, इसलिए चैनल फर्स्ट। एंड देन इमेज का विड्थ जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है, इमेज विड्थ कॉमा इमेज हाइट, राइट, लाइक दिस। लेकिन अगर चैनल फर्स्ट नहीं है, चैनल लास्ट में है, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मेट उल्टा होगा। तो इनपुट शेप, ये वेरिएबल का वैल्यू हम इस तरह से असाइन करेंगे। पहले होगा इमेज का विड्थ, देन होगा इमेज का हाइट, एंड देन होगा 3, क्योंकि ये कलर इमेज है तो इसके 3 चैनल है। तो इमेज किस तरह से यूज की जाती है या फिर किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है इस वाले केरास के बैकएंड में, क्योंकि केरास के अलग अलग वर्जन होंगे। नाउ करंटली वी आर यूजिंग दिस वर्जन एज वी हैव डाउनलोड पाइथन 3.8। नाउ उसका वर्जन अपडेट होगा तो बैकएंड में कुछ चेंजेस हो सकती है। तो हम पहले से चेक कर रहे हैं कि क्या है। तो हमें अब हमने यहाँ तक हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर 1 वेरिएबल इमेज का विड्थ, देन इमेज का हाइट, देन ट्रेनिंग डेटा है, कौन से डायरेक्टरी से आप डेटा लेना चाहोगे तो वो डायरेक्टरी,
वैलिडेशन डेटा डायरेक्टरी कौन सी है वो हमने यहाँ पे पिक कर ली। नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स आपके कितने हैं वो हमने देखे कि इतने नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स है, टेस्टिंग के सैंपल्स इतने हैं। इपॉक्स मतलब ट्रेनिंग के राउंड्स कितने होने वाले हैं वो हमने देखा। फिर बैच साइज हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस एट ए टाइम आप यूज करोगे ट्रेनिंग पर्पस के लिए। फिर इनपुट शेप मतलब जो इमेज आप उसको दोगे उसका शेप क्या होना चाहिए। तो अगर वो कलर इमेज है तो 3 नंबर ऑफ उसके चैनल्स है, फिर विड्थ या हाइट इस तरह से हम दोगे, या फिर अगर चैनल लास्ट में है तो इमेज विड्थ, इमेज हाइट, 3 इस तरह से लोगे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन किया जाएगा। तो इतने सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं, और इन सब वेरिएबल्स का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यूज करके अब हम बनाएंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2, एंड दैट विल बी बिल्डिंग द CNN मॉडल, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें एक ही ये नहीं है, तो इसके अंदर पहले हम मल्टीपल स्टेजेस करने वाले, तो पहले स्टेज 1 लिखेंगे यहाँ पे, स्टेज 1। और स्टेज 1 के अंदर हम नाम देंगे हमारे नेटवर्क को कुछ, तो मॉडल, लेट्स से मॉडल करके। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, मे बी ब्रेन ट्यूमर मॉडल और ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल मॉडल करके नाम देता हूँ। इक्वल टू सिक्वेंशियल कन्वोल्यूशनल neural network. Okay, so that will be our sequential convolutional neural network. That's what we are going to initialize over here. Now इसके अंदर सिंपली क्या करना है, एक के बाद एक ऐड करते जाना है, एक के बाद एक ऐड करना है। सो पहले मॉडल डॉट ऐड, तो इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, तो मुझे एक लेयर ऐड करनी है। कौन सी लेयर? कन्वोल्यूशन लेयर। पहले तो क्या होगी अपनी कन्वोल्यूशन लेयर होगी, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी किया है, कन्वोल्यूशन 2D वाला लेयर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कन्वोल्यूशनल 2D वो वाला लेयर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो इसके अंदर हमें फिल्टर्स, नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं वो मेंशन करने हैं। तो कन्वोल्यूशन में हमने देखा है कि इमेज का जो मैट्रिक्स है वो फिल्टर मैट्रिक्स के साथ उसका कन्वोल्यूशन होता है, तो वो, या फिर कर्नेल मैट्रिक्स हम बोलेंगे, उसके साथ उसका कन्वोल्यूशन होता है। तो कन्वोल्यूशन होने के बाद हमें उसके मिलेंगे फीचर्स। तो कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स आपको यूज करने, तो लेट्स से 32 नंबर ऑफ फिल्टर्स। ये नंबर कुछ और भी हो सकता है, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, लेकिन फाइनली जो एक्यूरेसी आएगी उसके बेसिस पे ये नंबर्स को आपको ट्विक करना होता है, पैरामीटर्स एडजस्ट करने होते हैं। 32 नंबर ऑफ फिल्टर्स मैं यूज करूंगा एक इमेज के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो कर्नेल साइज या फिर वो फिल्टर का साइज क्या होगा, तो 3 by 3 का फिल्टर होगा। तो ये भी यूजर डिफाइंड है, इट कैन ऑल्सो बी डिफरेंट। एंड नेक्स्ट इज इनपुट शेप। इनपुट शेप क्या होगा, इनपुट अंडरस्कोर शेप क्या होगी, और वो है अपना इनपुट शेप, क्योंकि मेरा इनपुट शेप करके एक वेरिएबल भी है, तो वही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को हमने बनाया है, उसके अंदर पहले तो आप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर पहला लेयर जो है वो है कन्वोल्यूशन, जो हमने थ्योरी में देखा लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में। कन्वोल्यूशन 2D ऐड करना है, उसको चाहिए फिल्टर्स। तो फिल्टर्स कितने हैं, 32 नंबर ऑफ फिल्टर्स। एक फिल्टर का साइज क्या है, 3 by 3। और इसको इमेज हम जो इनपुट देंगे उस इमेज का शेप क्या होगा, तो शेप ये होगा विड्थ हाइट, या 3, या फिर 3 कॉमा विड्थ कॉमा हाइट, ये उसका शेप होगा। तो ठीक है, यहां से तो हमने कन्वोल्यूशन लेयर तो ऐड किया। अब हमें सोचना है रेलू के बारे में, रेलू ऐड करना है अभी। तो मॉडल दैट डॉट ऐड, और यहाँ पे कौन सा अभी एक्टिवेशन। ओके, रेलू एक्टिव, जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर सॉफ्ट मैक्स एंड रेलू ये दो ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेलू। तो ठीक है, रेलू भी ऐड हो चुका है, कन्वोल्यूशन भी आ गया, रेलू भी आ गया। अब क्या बचा है, पूलिंग।
तो फिर से मॉडल डॉट ऐड करना है पूलिंग। पूलिंग का कौन सा लेयर है? मैक्स पूलिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैक्स पूलिंग हम ऐड करेंगे 2D एंड इसके अंदर अभी मेंशन करना है कि पूल साइज क्या होगी। तो फर्स्ट पैरामीटर हम जो लेंगे वो पूल साइज का होगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट यू शुड यूज द पूल साइज, सो पूल अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू हमें देना है, या फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 2/2, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम हमने जो ये भी देखा इम्प्लीमेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू, वहाँ पे भी हमने 2/2 पुल साइज यूज किया था, उसके ऊपर ही हमने देखा, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया अपना कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का फर्स्ट स्टेज रेडी, और इसके अंदर ये फीचर एक्सट्रैक्शन का स्टेज हो गया। ओके, सो दिस इज stage 1 of, we can say here, feature extraction। तो यहाँ से अपने फीचर्स निकलेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा वो फीचर्स निकलेंगे, और आप इस मॉडल को देख भी सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है। तो वो सब करने के लिए यहाँ पे सिंपली एक लिखना होगा प्रिंट, और यहाँ पे आप प्रिंट करो मॉडल डॉट समरी फंक्शन है। तो ये जो समरी है ना, वो मॉडल का समरी प्रिंट आउट करके दिखाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, और अब हम देखेंगे कि ये जो मॉडल बन चुका है उसके अंदर क्या-क्या चीजें आ चुकी है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड विल सी कि मॉडल के अंदर अब हमारे क्या-क्या है। तो it is loading the libraries and now you see here what you are getting. Now first of all you are getting this table. The table we are getting as a result। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि लेयर कौन सी लेयर है, तो पहले अपने कन्वोल्यूशन 2D लेयर है, और इसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसका शेप क्या होगा, 222/222 कॉमा 32, और एक्टिवेशन के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसका शेप ये होगा। एंड पूलिंग करने के बाद देखिए शेप यहाँ पे रिड्यूस हो चुका, अपना जो साइज है वो यहाँ पे कम हो चुका है, 11111, 32। सो दैट्स द आउटपुट दैट वी विल गेट आफ्टर पूलिंग। सो बिफोर पूलिंग साइज काफी बड़ा था तो उसको कंप्रेस कर लिया। नो आप यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछोगे कि हमारा तो इनपुट 224 था, तो ये 222 कहाँ से आ गया? तो उसके लिए आपको जाना होगा थोड़ा स्लाइड्स के अंदर, और कन्वोल्यूशन को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा कि कन्वोल्यूशन में आखिर हो क्या रहा है। तो अगर आप इस कन्वोल्यूशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो इमेज का जो साइज है उसका हाइट विड्थ एंड डी, तो इन आर केस इमेज का जो साइज है वो है 224/224, मतलब एच है 224, विड्थ है 224। लेकिन जो फिल्टर है उसका एच क्या है, 2, बिकॉज 2/2 का पुलिंग है ना। सॉरी, जो फिल्टर मैट्रिक्स, सॉरी नॉट 2, इट इज द कन्वोल्यूशन फिल्टर 3/3 है, राइट, 3/3। तो ये क्या है, 3/3। तो 3/3 है, तो ये उसका साइज है 3/3, हाइट 3, विड्थ 3, क्योंकि कन्वोल्यूशन के अंदर हमने 3/3 का यूज किया है। एंड डेप्थ उसका 32 है, क्योंकि 32 नंबर ऑफ फिल्टर्स हमने यूज किए हैं। सो उसका 32 डायमेंशन का डेटा 32 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो फाइनली जो बनेगा कन्वोल्यूशन के आउटपुट पे, वो क्या आएगा, h माइनस एफ एच, मतलब 224 माइनस 3, so that will be 221 plus 1, that will be 222। और वही चीज विड्थ के बारे में भी होगी। तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, 222/222 एंड 32। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिले हैं पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैरामीटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स। ट्रेनेबल पैरामीटर्स मतलब ऐसे पैरामीटर जिनका वेट, बायस, वो सब कुछ आप एडजस्ट करना है, उनके वैल्यूज अपडेट करने हैं। तो राइट नाउ अपने नेटवर्क में 896 नंबर ऑफ पैरामीटर्स है जिसके वैल्यूज अपडेट हो सकते हैं इन दैट न्यूरल नेटवर्क। तो इतने एट द एंड हमें यहाँ तक 896 नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, और उसके 896 नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो फिर से हम इसको क्लियर करवा देते हैं, और आगे की थोड़ी सी कुछ नंबर ऑफ लेयर्स को हम ऐड करेंगे।
तो ये हो गया अपना स्टेज 1 का। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्टेज नंबर 2। और स्टेज नंबर 2 के अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि कन्वोल्यूशन प्लस रेलू प्लस पूलिंग। अगर आप यहाँ पे आर्किटेक्चर देखोगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, सो कन्वोल्यूशन रेलू पूलिंग, कन्वोल्यूशन रेलू पूलिंग, कन्वोल्यूशन रेलू पूलिंग, कन्वोल्यूशन रेलू पूलिंग, नंबर ऑफ चीजें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेज 2 के अंदर विल ऐड नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन प्लस रेलू प्लस पूलिंग। तो 3 स्टेज तक हम जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेजेस तक आप जा सकते हो। समटाइम्स 16 स्टेज तक भी हो सकता है, 18 स्टेजेस तक भी हो सकता है। नंबर ऑफ जितने चाहिए उतने आप ऐड करोगे। जितने आप ऐड करोगे उतना नेटवर्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रेनिंग के लिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ये सब कुछ एक्यूरेसी पे निर्भर करता है कि आप कितने स्टेजेस उसमें ऐड करने चाहिए, कितने स्टेजेस वहां पे रखने चाहिए। तो ये जो आर्किटेक्चर है ना कि कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स के लेयर्स यूज करें, कि क्या साइज होगा फिल्टर का, तो ये यूजर के हाथ में है। ये सारा कंट्रोल यूजर के हाथ में। यूजर अपने हिसाब से उसमें नंबर ऑफ फिल्टर्स इंक्रीज कर सकता है, उसके साइजेस कम ज्यादा कर सकता है। एंड बेस्ड ऑन दैट उसको कुछ ना कुछ तो एक्यूरेसी मिलेगी। समटाइम्स एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। तो वो सब कुछ कंसिडर करके यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स उसको ट्विक करने होते हैं, और इसे हम बोलेंगे CNN का आर्किटेक्चर, जो आपने यहाँ पे यूज करा है। नाउ नेक्स्ट इज, हम यहाँ पे सेकंड स्टेज में फिर से कन्वोल्यूशन लेयर को ऐड करना चाहते हैं। तो वो ऐड करने के लिए फिर से मॉडल डॉट ऐड करना है, वही कन्वोल्यूशन ऐड करना है। सो अगेन कन्वोल्यूशन 2D, एंड इसके अंदर ये जो कन्वोल्यूशन 2D है, इसके अंदर अभी हमें मेंशन करना है कि फिल्टर। तो फिर से मैं 32 फिल्टर्स मेंशन करता हूँ, और उन फिल्टर का साइज 3 by 3 रखूंगा। अब यहाँ पे इनपुट देने की जरूरत नहीं, जहां पे जिसमें इसमें हमने इनपुट दिया, क्योंकि इसको इमेज इनपुट होगा। जो इनपुट है, जो इमेज आया है वो इनपुट होगा। इसको क्या होगा, इसको ये इनपुट नहीं होगा, इसको इस वाले लेयर का जो भी आउटकम होगा वो इसको मिलेगा। मतलब ये पूलिंग होने के बाद जो कुछ भी होगा वो इसको मिलेगा, और उसके बाद ये काम करेगा आगे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये रेलू और ये पूलिंग फिर से ऐड करना है। तो वही सब कुछ मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 स्टेज हमारी ऐड। तो 2 स्टेज के बाद हम इसकी समरी देखेंगे। ये जो समरी है, अब हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है प्रिंट करवाने में, यहाँ पे उसको प्रिंट करवाएंगे समरी ऑफ आवर नेटवर्क, और हम चेक करेंगे कि अब हमें क्या मिल रहा है। तो रन करेंगे, और फिर से इट विल बी प्रिंटिंग दिस समरी। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है कि जहाँ पे हमें फिल्टरिंग और जो भी उसका समरी है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले हमने कन्वोल्यूशन 2D का है, जो कि नंबर 1 लेयर है। उसमें 220 ये अपना साइजेस था, 896 जो लास्ट टाइम हमने देखा ना, ये पैरामीटर्स थे। उसके बाद एक्टिवेशन लेयर का काम आ गया। ये रेलू है, सिर्फ ये नेगेटिव को 0 करेगा, बाकी कुछ कंप्रेशन वगैरह नहीं करेगा। तो वो 222 220 32 आएगा। फिर मैक्स पूलिंग हमने देखा, मैक्स पूलिंग होने के बाद 1111 हो गया। अभी ये जो 111 का जो भी है ना, ये इनपुट होगा नेक्स्ट वाले कन्वोल्यूशन लेयर को। तो कन्वोल्यूशन 2D_1 ये नेक्स्ट स्टेज का कन्वोल्यूशन 2D है। तो यहाँ पे इसका साइज बन गया 109 109 32, और इतने नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर्स थे, और कुछ पैरामीटर्स इसके चलते यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिवेशन होने का मतलब रेलू ही है, तो कुछ सिर्फ नेगेटिव को 0 किया जाएगा, लेकिन कुछ पैरामीटर्स में या फिर साइज शेप में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। और पूलिंग फिर से ऐड करी है, तो मैक्स पूलिंग 2D_1, यहाँ पे मैक्स पूलिंग 2D था सिर्फ, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गया। तो फिर इसका जो डायमेंशन है, ये 109 जो था ना, उसको पूलिंग होने के बाद बन चुका है 54 by 54 by 32। एंड अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स बढ़ के, मतलब ये 9248 प्लस ये सब कुछ ऐड होके बन चुके हैं 10144। तो इसका मतलब है जब नेटवर्क ट्रेन होगा, एक इमेज को जब हम उसको देंगे, और ट्रेनिंग के टाइम पे जो मैंने बोला था कि वैल्यूज को अपडेट किया जाएगा, वो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, 10,144। इतने नंबर ऑफ वैल्यूज को फिनल एडजस्टमेंट किए जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं अभी
स्टेज 2 की, अब हम स्टेज 3 भी ऐड करेंगे। तो लेट्स अगेन क्लियर दिस वन। तो इसको फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ और स्टेज 3 की तरफ हम जाएंगे एंड वी विल ऐड स्टेज नंबर 3। तो इतना यही सब कुछ कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि यही सब कुछ मुझे चाहिए पेज नंबर 3 में। और यहाँ पे ये सब कुछ मैं एज इट इज भी रख सकता हूँ या फिर कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इस स्टेज में भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, इसमें भी कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो कर सकते हो। तो ठीक है, चेंजेस दिखाने के लिए इंस्टेड ऑफ 32 मैं यहाँ पे 64 नंबर ऑफ फिल्टर्स कंसिडर करता हूँ। अदरवाइज ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं कि इतने ही होने चाहिए या फिर वैसे ही होना चाहिए। इट्स अप टू यू कि क्या कर सकते हो, किस तरह से उसके अंदर फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हो। तो लेट्स रन वन मोर टाइम एंड नाउ वी विल सी कि क्या इसके अंदर होता है। तो फिर से हमें कन्वोल्यूशन 2D मिल चुका है एंड ये जो इनिशियली इतने थे, फिर ये हो चुका, फिर पूलिंग हुआ, ये पहला पूलिंग, फिर सेकेंड कन्वोल्यूशन लेयर ऐड हो चुकी है, एक्टिवेशन रेलू हो चुका है, फिर यहाँ पे पूलिंग 2 हो चुका है, उसके बाद हमें ये सब कुछ मिला। फिर कन्वोल्यूशन 2D का सेकेंड थर्ड स्टेज है एक्चुअली, इसके बाद ये 52 52 64 बन चुका है। फिर इसको फिर से एक्टिवेशन रेलू हो चुका है एंड फिर से पूलिंग हो चुका है। पूलिंग होने के बाद जो साइज है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, 26 26 64। दैट्स द फाइनल size, that's what we will get at the end. And now the trainable parameters are increased to 28,640. Initially it was around 10,000 but now it is 28,640। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फीचर एक्सट्रैक्शन का स्टेज। यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन का स्टेज हमारा कंप्लीट होता है। और जो भी इमेजेस हम इसको देंगे एक के बाद एक ये सारे लेयर्स के थ्रू जाएंगी और उनके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके एरे बनेंगे, वेक्टर बनेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनेंगे बेसिकली। एंड उसको फ्लैटनिंग लेयर जो आगे चल के होगी, वो फ्लैटनिंग लेयर उसको कन्वर्ट करेंगी वन डायमेंशनल एरे के अंदर। फिर हमें ऐड करना होगा फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, फिर हमें ऐड करना होगा सॉफ्ट मैक्स लेयर। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद हमारा बनेगा कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो आज के लिए विल स्टॉप वो हियर ओनली। आगे चल के इसी कोड को हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल बी एडिंग the classification stage as well. Now we are considering only the feature extraction stages and feature extraction layers only, where we have seen convolution layer, ReLU layer, and the pooling. ReLU is not the layer, it's the activation function basically, but the pooling is the layer that we are adding. And in the next session, we will be adding the flattening layer, softmax layer, and the fully connected neural network. After that, we will see how to optimize our function network, neural network, what could be the learning rate of it, and then we'll see how to generate the images or the data from the images, and then we will load our data set. After that, we'll load our data set, and after that, we will try to train our model. And after training the model, we will evaluate the performance of our model, and we will plot some graphs उसके accuracy और उसके losses के। और आफ्टर दैट ट्रेन मॉडल, जो भी नेटवर्क हमारा ट्रेन होगा उसको हम सेव कर देंगे बाय सम एक्सटेंशन। व्हाई? बिकॉज ट्रेनिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा, इट्स नॉट दी 5 मिनट और 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का प्रोसेस जैसे हमने लास्ट टाइम देखा। उसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए टाइम लगता था इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग, लेकिन वो काफ़ी स्मॉल टाइम था, लेट्स से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे few hours it will take to train the model. Okay, right now we'll be doing this only 5 epochs, so it will take only few minutes. But if you consider 25 number of epochs, it will take few hours. तो उतना ट्रेन होने के लिए अगर वो बार बार हमें फिर से ट्रेन और फिर से टेस्टिंग करने के लिए टाइम जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एजेंडा क्या होगा हमारा कि हम ट्रेनिंग का कोड कंप्लीटली डिफरेंट रखेंगे और टेस्टिंग का कोड कंप्लीटली डिफरेंट रखेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को, जो ट्रेन मॉडल है, जो ट्रेन नेटवर्क है, जो ट्रेन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, उसको हम सेव कर देंगे। और जो टेस्टिंग का जो कोड होगा, वो टेस्टिंग का कोड क्या करेगा,
सिंपली जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करके सेव हो चुका है उसको लोड करेगा और डायरेक्टली इनपुट को इमेज देगा और चेक करेगा कि उसका आउटपुट क्या है, उसको ट्रेनिंग नहीं करेगा। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस विल बी डन ओनली फॉर वंस। तो एक ही बार हम ट्रेन करेंगे और मॉडल को सेव करेंगे। सो दैट वी विल डिस्कस in the next session. And before we close the today's session, if you are having any queries and doubts regarding the convolutional neural networks, you may ask in the chat session.